Assalamu alaikum students. Solving quadratic equations, a very important topic again. और this is a question from your exam paper grade 9 के पेपर 2 का ये question है। और ग्रेड 10 के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे जिसमें उनसे बोला गया था कि you have to solve this quadratic equation. We have learned a number of methods quadratic equations को solve करने के लिए. We learned about completing square method, we learned about the quadratic formula method, एंड वी ऑल्सो लर्न द फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. तीनों मेथड्स में से जो बेस्ट मेथड था वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड था, लेकिन द प्रॉब्लम विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज दैट अगर पेपर वन में यू आर गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so you have to use the factorization method for that because the calculator is not allowed and you do not know the square root of all the numbers. So I told you that if this type of question is coming in paper 1, you will always apply the factorization or the middle term breaking method. First you will factorize your question and then you will solve it by using the zero property. यही तरीका मैंने आपको बताया था. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 2 का ये क्वेश्चन था. तो हेयर यू कैन ऑल्सो अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन मैंने जो है वो इसको फैक्टराइजेशन से ही किया है क्योंकि मुझे जो है वो सारे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से बड़े आसान लग रहे थे करते हुए. तो मैंने यहाँ चारों क्वेश्चंस में आई हैव अप्लाइड द फैक्टराइजेशन मेथड. इन सम पार्ट्स द फैक्टराइजेशन वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, पहले से ही फैक्टर्स बने हुए थे. आई जस्ट यूज द जीरो प्रॉपर्टी. और कुछ पार्ट में मैंने जो है वो लास्ट पार्ट में मैंने जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करके फर्स्ट आई हैव फैक्टराइज. पहले मैंने क्वेश्चन को फैक्टराइज किया एंड देन फिर बाय पुटिंग द ब्रैकेट इक्वल टू जीरो वन बाय वन आई जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो लेट्स जस्ट डिस्कस द फोर पार्ट्स मैंने पहले से सॉल्व किए हुए और एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ उनकी. द फर्स्ट पार्ट वाज x ब्रैकेट ओपन x माइनस थ्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू जीरो. द क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन द फैक्टराइज फॉर्म. अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहले इसको जो है वो इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया. एक्सपेंड किया तो x मल्टीप्लाई बाय x बिकम्स एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो. और ये काम बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है. और उसके बाद उन्होंने जो है वो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करी. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद भी आपको यही दो आंसर्स मिलेंगे बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बट द प्रॉब्लम इज दैट इन ऑर्डर टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी सी फर्स्ट. तो ए की वैल्यू मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है. तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, सो द वैल्यू ऑफ ए इज वन एंड द बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो बी जो है उसकी वैल्यू माइनस थ्री हो गई. अब यहाँ मुझे सी नज़र नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझ में आया और उन्होंने सी की जगह पे वन ले लिया. यहाँ सी नहीं है, इसका मतलब यू विल टेक द वैल्यू ऑफ सी एज जीरो और फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर. लेकिन उससे काफ़ी लंबी वर्किंग हो जाएगी, काफ़ी सारे स्टेप्स हो जाएंगे और इसमें सिर्फ दो मार्क्स है इस पार्ट के. तो आई थिंक द बेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये फैक्टराइजेशन मेथड इसका बेस्ट था क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज क्वेश्चन हुआ है. यू जस्ट हैव टू पुट ईच ब्रैकेट इक्वल टू जीरो वन बाय वन विच इज कॉल्ड द जीरो प्रॉपर्टी, जो हमने जीरो प्रॉपर्टी क्लास में डिस्कस की थी बेसिकली. तो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर एक्स माइनस थ्री है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जीरो आ रहा है. इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर जीरो होगा. तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी दोनों नंबर्स को इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा. यही जीरो प्रॉपर्टी कहती है और यही हम जो है वो यूज करने वाले हैं. तो आई विल जस्ट फर्स्ट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है एक्स माइनस थ्री, जब मैं एक्स माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो करूंगा तो दिस माइनस थ्री विल गो ऑन द अदर साइड एंड इट विल गेट एड अप विद जीरो. जीरो में थ्री ऐड करूंगा तो माई आंसर विल ऑलवेज बी थ्री. तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो एंड थ्री. दो वैल्यूज एक्स की आ गई, दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी एग्जैक्टली यही दो आंसर्स आएंगे, जीरो एंड थ्री. बट आपको काफ़ी सारी वर्किंग करनी पड़ेगी. अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, जस्ट पुट द आंसर्स बैक इन द इक्वेशन और फिर इक्वेशन को वेरीफाई कर लो. आपके दोनों वैल्यूज से आपकी ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी. सो दिस मीन्स द टू वैल्यूज ऑफ एक्स इज जीरो एंड थ्री. Again, the same strategy will be applied in the second part. In the second part, this is 2x minus 3. The first bracket is 2x minus 3, and the second bracket is 4x minus 5 equals to 0. Again, there is a 0 on the other side of the equation, so I can apply the 0 property.
Zero property says the product is zero, so just put the bracket equal to zero one by one. So I will just put this first bracket 2x minus 3 equals to 0, and I will just find the value of x by shifting everything on the other side. This is minus 3. When it will go on the other side, it will become positive 3. 0 plus 3 will give me 3. This is 2x, and since I have to find the value of x, so this 2 is being multiplied on this side, it will get divided on the other side. So the value of x is coming out as 3 upon 2. I will do the same with this bracket also. 4x minus 5 will be equals to 0. This is minus 5. It will go on the other side. Positive 5. 0 plus 5 will give me 5. And I will just shift this 4 on the other side. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो द अदर वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 5 upon 4. In the third part, the question is 12x square minus 4x equals to 0. Again, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आ गया जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था और इसमें द क्वेश्चन इज नॉट फैक्टराइज, ये पहले से फैक्टराइज नहीं है, तो आई कैन सी समथिंग कॉमन इन दीज टू टर्म्स, सो इसीलिए मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर रहा था क्योंकि मुझे यहाँ कुछ कॉमन नज़र आ गया था। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो 4x है, तो आई एम टेकिंग 4x एज कॉमन। व्हेन आई विल टेक 4x एज कॉमन, यहाँ 12x स्क्वायर था, तो सिंस आई हैव टेकन 4 एज कॉमन, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स मी 12, so 3. And since there is x square, I have taken 1x as common, so 1x will be inside. Minus sign will be as it is. Since I have taken 4x as common, so I will just write 1 and then bracket close equals to 0. Now the question is factorized and equals to 0 means I will just put the 0 property. I will just put 4x equals to 0 first. 4x equals to 0 means I have to find the value of x. So I will just shift this 4 on the other side and this is being multiplied on this side. It will get divided. 0 divided by 4 will give me 0. So the first value of x is coming out as 0. The next bracket is 3x minus 1. So I will just put 3x minus 1 equals to 0. So this is minus 1. It will go on the other side and it will get added up with 0. 0 plus 1 will give me 1. And since I have to find the value of x, I will shift this 3 on the other side. The value of x is coming out as 1 upon 3. The last part again, 2x square minus 7x plus 6 equals to 0. You have to solve it, means you have to find the value of x. You can go with the quadratic formula method. Quadratic formula से भी कर सकते हैं इसको। मैंने इसको भी जो है वो फैक्टराइजेशन से ही किया हुआ है क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ जो है वो फैक्टर्स बड़े इजीली बन रहे हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 12। और ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूँ 12 आंसर आए और ऐड करूँ तो 7 आए, तो 3 एंड 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 एंड 4 प्लस 3 इज 7। सिंस आई हैव सिंस आई हैव टू गेट अ पॉजिटिव प्रोडक्ट, तो इसीलिए मैंने -4 को और 4 और 3 को दोनों को नेगेटिव साइन दे दिया क्योंकि मुझे चाहिए था 7x और मुझे पता है कि 4 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो 7 बनेगा। तो सिंस मैंने दोनों को नेगेटिव साइन दे दिया तो इसीलिए -4x माइनस 3x विल गिव मी -7x, और -4x और -3x को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 12x स्क्वायर। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। ये मैंने अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है और नाउ आई जस्ट हैव टू पेयर देम अप एंड टेक कॉमन। पहली दो टर्म्स में से मुझे 2x कॉमन नज़र आ रहा है तो मैंने 2x कॉमन ले लिया inside the bracket x minus 2 bracket close, and then I can see a negative sign क्योंकि मुझे यहाँ नेगेटिव चाहिए तो I have to take negative as common, और 3 यहाँ से कॉमन नज़र आ रहा है क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो I can take 3 as common inside the bracket. It will be x minus 2 bracket close equals to 0. The two brackets are same. This means I have applied the method correctly. Middle term breaking method मैंने बिल्कुल सही लगाया। I will take x minus 2 as common, और x minus 2 को जब कॉमन लूंगा तो उसके बाद 2x minus 3 will come inside the next bracket equals to 0. Now the question is factorized. I just have to put the brackets equal to 0 one by one, मतलब 0 property apply करनी है। So I will just go with the first bracket, x minus 2 equals to 0. This is minus 2, it will go on the other side, add हो जाएगा। So 0 plus 2 will give me 2. So first value of x is coming out as x is equals to 2. 2x minus 3 equals to 0. This is minus 3. It will go on the other side. ये 3 हो जाएगा क्योंकि 0 plus 3 3 होता है. And then I have to shift this 2 on the other side. So x will be equals to 3 upon 2, which is the second value of x for the last part.